Good morning, students. How are you? I think that you all are studying at your home very well. So, in the rectification of errors in the class 11 commerce in the accountancy, our running chapter is rectification of errors. So, in this series today we are going to solve the practical question number 9, that is also based on the two sides of errors. So in this question, there is something different question from the earlier question that we have already done. So, rectification of errors में question number 9 हम लोग solve करेंगे. So first of all, read the question that is given on the page number 19.41. 19.41 में question दिया है. तो question में given है कि furniture purchase from for 10,000 wrongly debited to the purchase account. ठीक है, फर्नीचर परचेज किया गया है वो फॉर 10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट. तो इन दिस फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया गया कि फर्नीचर परचेज 10,000 का बट रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट. तो यहाँ पे देखो हमने रॉन्ग एंट्री आपके लिए बनाया हुआ है. ये रॉन्ग एंट्री ऑलरेडी पास्ट है, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री को कैसे बनाना है. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हमने क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज. 10,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया बट वी हैव रॉन्गली डेबिटेड इन द, कहाँ पे डेबिट कर दिया गया है, परचेज अकाउंट में. वी हैव, दिस इज द रॉन्ग एंट्री, वी हैव एंटर्ड हियर परचेज अकाउंट वी डेबिटेड विद रुपीज 10,000 एंड टू कैश अकाउंट. ठीक है, हमने ये एंट्री बनाया हुआ है परचेज अकाउंट को, बट द करेक्ट एंट्री शुड बी, correct entry should be the furniture account debit to cash account, because we have purchases the furniture, not the any commodity for the business purpose. So rectification entry should be, so we have to make the credit to the purchase account because we have wrongly debited to the purchase account, and we have to make the credit to the purchase account, and right debit should be the what, debit should be the furniture account. So rectification entry will be here, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. दिस एंट्री should be, if you are going to rectify the journal entry, we have to make the, because earlier we have in the books we have debited to purchase account, but the account should be debited, furniture account should be debited, so we have not make the debit. So in the rectifying entry we will make the debit here for the furniture account, we will make the debit, but wrongly we have make the purchase account debit, so we have to put the purchase account in the credit position for the rectification purpose. So we have taken here the purchase account in the credit position for the rectification entry. So rectification entry will be furniture account debit to purchase account. Okay. So second one entry is the machinery purchase on the credit from the Raman for the 20,000 was recorded through the purchase book. हमने भाई मशीन परचेज किया, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे हमने मशीन परचेज किया रमन से, बट हमने उसको की एंट्री कहाँ पे पास कर दिया, बट वी हैव एंटर्ड इन द परचेज बुक, वी हैव एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट को वी हैव मेक द डेबिट एंड टू रमन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया. रमन अकाउंट एट द राइट पोजीशन, रमन अकाउंट हमारा क्रेडिटर है इसलिए हमें राइट पोजीशन पे हमने इसको किया, बट द डेबिट अकाउंट इज नॉट एट द राइट पोजीशन. तो परचेज अकाउंट को हम लोग रॉन्गली डेबिटेड कर दिया है, हम लोग रॉन्गली इसको डेबिट किए, तो इसको हम लोग क्रेडिट पोजीशन पे ले जाएंगे. और व्हाट द करेक्ट पोजीशन ऑफ द डेबिट इज, डेबिट इज वी हैव परचेज द मशीन, सो वी हैव टू मेक द डेबिट और द मशीनरी अकाउंट. तो यहाँ पर हमको फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पस वी हैव टू मेक द डेबिट मशीन अकाउंट, because really we have purchased the machine, but wrongly we have debited the purchase book. So machine account should be debited. So but we have made the debit purchase account. So now we will, for the rectification purpose, we will transfer the purchase account in the credit position to purchase account of rupees 20,000.
भाई यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव नॉट एंटर्ड so earlier. So now we will make the debit for machine account to debit करेंगे and purchase account will be credited because we have wrongly debited the purchase account in the debit position. So now we will make the credit to the purchase account. So this was the our rectification entry. So now take the point 3 जिसमें दिया गया रिपेयर और मशीनरी ऑफ 1400 डेबिटेड टू द मशीन अकाउंट। ठीक है, हमने मशीन अकाउंट को, हमने मशीन की रिपेयर कराया तो मशीन अकाउंट को हम लोग को क्या करना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना चाहिए था, बट वी हैव मेक द डेबिट हियर, मशीन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और टू कैश अकाउंट कर दिया, यानी कि रॉन्गली हमने मशीन को डेबिट कर दिया है। तो मशीन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रॉन्गली डेबिट कर दिया, जिसको क्रेडिट पोजीशन पे ले जाएंगे तो डेबिट पोजीशन शुड बी, डेबिट पोजीशन क्या होना चाहिए था, रिपेयर। तो रिपेयर को हम लोग डेबिट करेंगे और मशीन को क्या कर देंगे, क्रेडिट पोजीशन पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर ऑफ मशीन लिख सकते हो, रिपेयर ऑफ मशीन अकाउंट टू डेबिट टू व्हाट, टू मशीन अकाउंट। तो इनकी हमारी 1400 से 1400 कर लो, उसकी एंट्री पास कर देंगे। ओके, so rectification entry will be repair of machine account debit to machine account. Okay, so now take the another problem, repair on the overhauling of the second hand machine purchased. भाई second hand हमने machine purchase किया है and we paid the 2000 for the overhauling. ठीक है, by overhauling we are supposed to be machine work in the machine will replace in the good condition for the purpose of operation of business, for the purpose of production, whatever for the purpose they are purchasing the machine. So we have wrongly made here the repair account, we have debited the wrongly repair account because the second hand machine purchase, so machine account should be debited because the machine we have purchased here. So repair on the overhauling of the second hand machinery. So whatever the expenses we pay on the purchase of the any type of machine for the first time, we have to add it in the machinery account and in the assets account. So we should make the debit to the machine account, but we have wrongly debited the repair account. So now we will rectify the entry by debiting the machine account. So here you can say second hand machine account debit, second hand machine account debit to repair account by rupees 2000. तो हम लोग को यहाँ पे 2000 रुपये से मशीन सेकेंड हैंड मशीन अकाउंट को we will make the debit with rupees 2000 and to repair account with rupees 2000 because we have wrongly debited to the repair account. So now for the rectification purpose we will make a debit second hand machine account because it is the new machine for the business purpose. So machine account will be debited and to the repair account. Now the last entry is sale of old machinery at a book. Sale of old machinery So sale of old machine at a book value of 3000 was credited to the sale account. ठीक है, हमने सेल ओल्ड मशीन को हमने सेल किया हुआ है, सेल किया है ओल्ड मशीन को, यहाँ पे ओल्ड मशीन को हमने सेल किया तो हमने इसको बट हमने इसको क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में। तो वी हैव मेड हियर द कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और टू सेल्स अकाउंट में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री हमने इस तरीके से कुछ पास किया, सेल्स अकाउंट डेबिटेड विथ रुपीज 3000 भाई 3000 रुपये का हमने सामान क्या किया है, ओल्ड मशीनरी को हमने सेल किया, यानी कि ओल्ड मशीनरी को आप सेल करते हो तो
for the purpose of the operating income, we cannot include the sale of old machinery in the operational income. So for the conceptual way, so that should be not regarded as like this, because we have not the sell the goods, we have sell the goods, we have sell the old machinery. This is the not part of the operation of the business. So then we have normally entered as like this cash account debit to sales account, but the correct entry should be cash account debit to old machinery account. Correct entry should be cash account debit to old machinery account, but wrongly we have entered here cash account debit to sales account. So we in this way we are suppressing, we are making the excess credit to the sales account. For the rectification purpose, we have to make the debit to the sales account, and we will make the credit. तो फिर यहाँ पे एंट्री बनाई जाएगी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी किया गया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, तो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पस एंड टू मशीनरी अकाउंट. So for the rectification, sales account will be debited. Sales account will be debited to what? To old machinery account. Because earlier we have not taken the old machinery, we have just taken the cash account debit to sales account. So old machinery was taken over by the seller. So we have to make the credit to the old machinery account here, and we have only credited the sales account. Now we have, for the rectification purpose, we have to make the debit the sales account. So sales account will be debited with rupees 3,000. and old machinery account will be credited with the rupees 3,000. So this was our rectification entry, students. So now you can see all the entries of the rectification. So in this way we will pass the journal entry. So students, in this way we will pass the rectifying entry if we have wrongly entered all the journal entry in this way, but for the rectification purpose we will pass the rectifying entry in this way. So you can also pass the correct entry as well as the wrong entry for the better understanding purpose. Then you can rectify your journal entry by making the like this. So this was the today our class. So for the homework purpose, all the rest of the question will be done at your home for the copy correction purpose. So all the students are advised to solve all the question based on the two-side errors. If you are facing any problem, we will consult. We will make the video for the purpose of solving the problem. So that is all for the today. Okay. Have a nice study. Thank you.